Assalamu alaikum, dear viewers. This is Shahzab Ali live from the Scholarship Insights YouTube channel. My name is Shahzab Ali. I'm the chairperson of Law Students Council and the final year law student at International Islamic University, Islamabad. I welcome you all in today's webinar on exploring SUSI 2024. Before moving forward, I must extend my gratitude to Mr. Usman for inviting me on his platform, which is Scholarship Insights. And I'm really glad to be here. And definitely, we'll try to make it bilingual. कोशिश करेंगे कि इसको उर्दू ज़बान में भी एक्सप्लेन करें और फिर ये है कि ताकि तमाम ऑडियंस को हम ज़्यादा से ज़्यादा incorporate कर सकें. So I would request to move slide to the next. All right, so these will be the contents for our webinar tonight. First of all, we'll have a short SUSI overview, and then we'll shed some light on the journey, and we'll explore SUSI 2023 journey, the journey which I experienced in person at University of Massachusetts and in various states of United States of America. Secondly, thirdly, we'll also discuss the difference between SUSI public policy making and SUSI Madeline K. Albright. And then we'll move forward with cracking SUSI application, in which we'll discuss how a good SUSI application is formed, what are the major components of a good SUSI applications, and then we'll talk a little about the SUSI interview. And before that, we'll also shed some light on statement of purpose. And last but not least, we'll have question and answer session where you'll have opportunity to ask me questions pertaining to SUSI experience, and I'll try my best to answer the questions. All right, ladies and gentlemen, what is SUSI? SUSI stands for Study of U.S. Institutes. It is basically an initiative of Bureau of Education and Cultural Affairs, U.S. Department of State. And the purpose for taking this initiative is basically public diplomacy and, of course, promoting cultural harmony. So this program is run by the public diplomacy sections of U.S. embassies across the world. And mostly students think that SUSI is only for Pakistan, whereas let me remind you that SUSI is a global program. इसमें different countries से मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ programs हैं जो different students के लिए और different categories में announce होते हैं. For instance, जब हम SUSI public policy making पे थे और University of Massachusetts में थे, उस वक्त University of Massachusetts में SUSI for MENA region on entrepreneurship and economic development चल रहा था. So that was basically for Middle East and North Africa. So for Pakistan, there are 3 SUSI programs. Number 1, SUSI for student leaders from Pakistan on comparative public policy making, जो कि आज हमारा मौजूए गुफ्तगू भी होगा. उसके बाद SUSI Madeline K. Albright for young women leaders. ये खास तौर पे जो ख़वातीन स्टूडेंट्स हैं, अंडरग्रेड स्टूडेंट हैं, उनके लिए प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है और ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस में चलता है. और थर्ड प्रोग्राम जो पाकिस्तान के लिए रन किया जाता है, दैट इज SUSI स्कॉलर्स. SUSI स्कॉलर्स बेसिकली यूनिवर्सिटी के जो परमानेंट फैकल्टी मेंबर्स या प्रोफेसर्स होते हैं, उनके लिए नॉमिनेशन बेस्ड प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया जाता है. हमारा जो आज के वेबिनार में फोकस होगा, दैट वुड बी SUSI फॉर पब्लिक पॉलिसी मेकिंग. All right, time to explore the amazing SUSI 2023 journey. First of all, it was an excellent journey. A journey that transforms the whole personality of individuals, an amazing journey where you experience different things in different time, and every moment teaches you something. So the glance you are currently looking at is the SUSI group with the officials from US Embassy, US Consulate General in Karachi, and US United States Educational Foundation in Pakistan. And we are at Merit Hotel Karachi for pre-departure orientation. So whenever USCFP announces any exchange program, उससे पहले pre-departure orientation conduct की जाती है ताकि students को तैयार किया जा सके उस journey के लिए, उसमें क्या challenges आएंगे वो बताने के लिए, और finally आपकी timeline, आपकी experiences और उसके साथ कुछ short tips and tricks. So this was all about pre-departure orientation, which was held at Karachi. Moving forward, this is a SUSI group at Doha Airport, Qatar, when the SUSI group carried the green flag with pride at the Doha Airport. And we were there for a layover of around 2 hours before we landed at Boston.
So this is the SUSI group at Qatar Airport. Moving on to the next slide, ladies and gentlemen, this is the day one, the amazing day I actually remember at University of Massachusetts in Amherst. On the top left, you can see a board having the schedule, which says that there would be some team building exercises, and then there would be breakfast, then lunch, then dinner. So इस तरह होता है कि जब आप सूजी प्रोग्राम में होते हैं तो एक कैलेंडर आपके सामने है जिसे कहें स्केड्यूल बोर्ड जिसे आप कहते हैं. स्केड्यूल बोर्ड आपके लिए रखा जाता है जिसमें नेक्स्ट डे का जो भी स्केड्यूल होता है वो आपको पहले बता दिया जाता है. ऑन द बॉटम लेफ्ट यू कैन सी अ बिल्डिंग. दिस इज द नॉर्थ सी अपार्टमेंट इन यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स, जहाँ पर हमारी रेजिडेंस थी. सिर्फ हमारी नहीं बल्कि सूजी फॉर मीना रीजन और उसके अलावा सूजी स्कॉलर्स, जिसमें पाकिस्तान से भी एक स्कॉलर आए हुए थे, गालिबन यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से, वो भी वहाँ थे. एंड ऑन द राइट साइड यू कैन सी अ फाइल which was individually prepared for everyone, which contained some important documents for the better understanding of the university academic system. Moving to the next slide. All right, this is a SUSI group at University of Massachusetts, and we are absolutely thrilled and excited for the cultural orientation at UMass. So जैसे ही SUSI group University of Massachusetts में जाते हैं तो एक एकेडमिक ओरिएंटेशन होती है जो कि वहाँ के एकेडमिक डायरेक्टर्स कंडक्ट करते हैं, और सेकेंडली कल्चरल ओरिएंटेशन होती है इन व्हिच यू बेसिकली एक्सपीरियंस द यूएस कल्चर, इंटरेक्ट विद पीपल फ्रॉम यूएसए, एंड वी ट्राई टू वेयर द पाकिस्तानी कल्चरल ड्रेसेस so that they could be aware of how Pakistani culture is all about. All right, moving to the next slide. You can see this is an amazing memory. This is a random tea party by SUSI Pakistan group, and you can see the mentors in this picture, and then at the back you can also see some other students of United States who joined us. We invited all the mentors, we invited all of our US friends there and organized a tea party for them, and we also took some Pakistani snacks for them and gifted them some things from Pakistan. So this was an amazing memory during the SUSI journey entire. Moving to the next slide. This is when the SUSI group had conducted the team building exercises and the networking games. So there were certain networking games, networking activities जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में हमने कंडक्ट की थी. और उसके बाद SUSI ग्रुप की ये एक और मेमोरी है, एक और पिक्चर है कि जहाँ पर कुछ हमारे मेंटोर्स भी पिक्चर में हैं और कुछ मेंटोर्स नहीं हैं. Alright, next slide please. Alright, this is July 1 fireworks. As you all know, July 4 is the US Independence Day. लेकिन मैसाचुसेट्स में और ख़ास तौर पे एमर्स्ट में जो फायरवर्क्स होते हैं, सेलिब्रेशन होती है इंडिपेंडेंस डे की, वो जुलाई 1 को होती है. द रीज़न बीइंग कि 4 जुलाई को सारे जो सिटीजन्स होते हैं वो चेस्टरफील्ड पे जो उनकी इंडिपेंडेंस परेड होती है उसको विटनेस करने के लिए जाते हैं. तो लिहाजा ये जुलाई 1 की तस्वीर हैं कि जहाँ पर फायरवर्क्स के बाद इन तस्वीर में आप ख़ास तौर पे देख सकते हैं सूजी मीना रीजन के स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं, जिसमें टूनीशिया, जॉर्डन, उसके अलावा इजिप्ट, मोरक्को और कुछ ममालिक के स्टूडेंट्स थे. और उसके अलावा सूजी फॉर स्कॉलर्स भी आप देख सकते हैं. इन द वेरी फ्रंट यू कैन सी अ टीचर who was from India. On her left you can see a teacher from Israel, and then in the very center you can see a teacher from Peru. So we had diversity in our programs, and this is an excellent opportunity कि जहाँ पर सिर्फ आप पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के साथ नहीं बल्कि और जो डिफरेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स पे आए हुए होते हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन करते हैं, उनसे सीखते हैं, कल्चर एक्सचेंज करते हैं और उनको अपने बारे में बताते हैं और उनसे उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं. So this was another opportunity to interact with everybody. All right, moving to the next. This is a July 4 parade at Chesterfield, which was I just referred. और इसमें इंडिपेंडेंस डे की बहुत एक पुरवकार तकरीब होती है, पुरवकार परेड होती है, और जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हिस्सा लेते हैं, सिविलियन डिपार्टमेंट्स हिस्सा लेते हैं और मिलिट्री डिपार्टमेंट्स भी इसका हिस्सा लेते हैं. नेक्स्ट प्लीज. This is another memory when SUSI group was doing a volunteer activity at Food Bank Farm.
तो होता ऐसा रहा है कि जो सूजी ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए कुछ वॉलंटियर एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की जाती हैं। फॉर एग्जांपल हमने एमर्स सर्वाइवल सेंटर विज़िट किया, उसके अलावा फूड बैंक में हमारी एक्टिविटी थी और उसके अलावा मल्टीपल ईट अलोन ब्रेड जहाँ पर फ्री मील प्रोवाइड की जाती है नीडी और होमलेस लोगों को, तो वहाँ पर हमारी एक वॉलंटियर एक्टिविटी थी। तो दिस वाज वन ऑफ द एक्टिविटीज़ व्हिच वी कंडक्टेड एंड दिस इज़ ऑल अबाउट लर्निंग एंड एन्जॉयिंग। सो दिस वाज रियली फन। This is a SUSI group at Harvard University, which was dream of many to visit. So when we were on a study tour to Boston, this is when we explored the Harvard University in particular. And particularly, I was super excited for the Central Library of Harvard University, which I'm grateful I got a chance to visit. So this is the picture of Harvard University. Moving next, this is the SUSI group being welcomed in the Pakistan Consulate General when we met Her Excellency, former Consulate General in New York, Miss Aisha Ali. And then the Consulate General also arranged our visit to United Nations. So it was a different feeling visiting your country's embassy, talking to your country's representatives in a foreign country. So this is an amazing memory. And this is finally the visit to United Nations headquarters in New York, or we visited multiple departments of UN, including the General Assembly, Trusteeship Council, Security Council, and various other organs of United Nations. So this was another amazing experience. And finally, this is the farewell and certificate awarding ceremony at Washington, जहाँ पर हमें कुछ मेंटोर्स की तरफ से, एकेडमिक डायरेक्टर्स की तरफ से गिफ्ट्स मिले थे और उसके अलावा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से सर्टिफिकेट सेरेमनी पे हमारे लिए हुई थी. सो दिस वाज द फाइनल मेमोरी वी हैड. All right, ladies and gentlemen, now we'll talk about why SUSI. The answer is very simple. It is an excellent opportunity which firstly is very much feasible and convenient according to its timeline. इसकी वजह से आपका सेमेस्टर डिस्टर्ब नहीं होता, आपकी एकेडमिक्स डिस्टर्ब नहीं होती. ये बेसिकली अर्ली जून टू लेट जुलाई कंडक्ट होता है. तो सारे जून और जुलाई में तमाम अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में, अक्सर जामियात में जो कि वेकेशंस होती हैं, छुट्टियाँ होती हैं, तो लिहाजा दिस इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, कन्वीनियंट एंड फीजिबल प्रोग्राम. अक्सर स्टूडेंट्स के शिकवे होते हैं कि यू ग्रेड में हम कैसे जाए, वी कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट अ होल सेमेस्टर, और उनकी यूनिवर्सिटी इनको एक्सेप्ट नहीं करती थी वहाँ के क्रेडिट्स को. तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर SUSI. इट्स 5 weeks long and it's very convenient. Secondly, it's of course focused on comparative public policy making. It allows you to explore various aspects of how policies are formed in US, how an efficient policy impacts the whole society, impacts the life of an individual. So this is an opportunity to experience it, particularly practically. And then, of course, it helps you building critical thinking, growing mentally, and growing your personality. It improves your CV. It gives you leadership exposure. And of course, due to addition of 10 days study tour to the northeast of US, this is an amazing opportunity to travel, to talk to new people, to learn from them. So highly recommend, 10 out of 10 recommended. All the undergraduate eligible students are highly encouraged to apply. This is an excellent opportunity which one must avail. Moving forward in the next slide. All right, we'll talk about what's difference between SUSI Public Policy and SUSI Medlin. SUSI Public Policy making is open for male and female undergrad students. SUSI Public Policy making is 5 weeks long, and SUSI Medlin K. Albright, it is exclusively for females. So जितने भी females हैं वो फॉर्म फिल कर रही हैं, I would highly recommend कि वो दोनों प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करें. जहाँ पर ऑप्शन होता है कि कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रही हैं, तो you should select both. The reason being कि इससे सिलेक्शन के चांसेस भी ज़ाहिर आपके बढ़ जाते हैं, और उसके अलावा कहीं पर भी आपकी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो you can still avail that opportunity. It is also 5 weeks long. Timeline almost similar है. जो मेडलिन प्रोग्राम है हमारे टाइम में ऑलमोस्ट 1 week पहले स्टार्ट हुआ था हमसे, और हमारा SUSI पब्लिक पॉलिसी 1 week लेटर स्टार्ट हुआ था. और SUSI पब्लिक पॉलिसी यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स इन एमर्स्ट में होता है, और SUSI मेडलिन यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस में. Public policy making is focused on, of course, comparative public policy making,
whereas SUSI Medlane is focused on women leadership और women in technology, in science और इन तमाम चीज़ों पर discussions होती हैं और focus उनका primarily वो होता है. And then SUSI Public Policy Making, of course, includes 10 days study tour to New York, to Washington, Boston, और इस मरतबा हमारे टाइम में गेटिसबर्ग था, इस मरतबा गालिबन गेटिसबर्ग को रिमूव किया गया और वर्जीनिया को ऐड किया गया. So that is a good study tour. SUSI Medlane also includes study tour, लेकिन it is limited to 1 or 2 cities. And then it also adds a self-defense course, which is particularly designed for female students. So this was the basic difference between both the programs. All right. Now is the most important part of the today's webinar. और हम बात करेंगे कि basically SUSI application, Medlane और SUSI public policy making दोनों के लिए similar है. मैं कोशिश करूँगा कि जितने सादा और अल्फाज में मुमकिन हो सके आपको कन्वे करूँ कि किस तरह आप अपनी एप्लीकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं. सबसे पहले तो आई एम प्रिटी श्योर जितनी भी हमारी ऑडियंस होगी, यू ऑल मस्ट हैव गॉन थ्रू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वाज़ेह तौर पर मेंशन है कि फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं. तो लिहाजा इट शुड बी क्लियर दैट इफ़ यू आर इन फर्स्ट ईयर और इन लास्ट ईयर, अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट एलिजिबल. सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और अगर आपका प्रोग्राम 5 ईयर है तो आप 4th ईयर में अप्लाई कर सकते हैं. ऑलराइट, ओके, अब हम बात करेंगे कि SUSI एप्लीकेशन में बेसिकली इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या हैं. वैसे तो ये बात जहन नशीन कर ली जाए कि SUSI एप्लीकेशन में एक एक सवाल इंतहाई अहमियत का हामिल है, और अगर हम उसको बिल्कुल गौर के साथ और उस पर गौर व फिक्र करके सही जवाब नहीं देंगे तो ज़ाहिर है वो हमारी पूरी एप्लीकेशन के इस पूरे अमल में एक नेगेटिव रोल ज़रूर अदा करेगा. लेकिन जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं हम उन पर बात करेंगे. पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है एकेडमिक्स. एकेडमिक्स में ज़ाहिर है आपकी मेट्रिकुलेशन की मार्क्स आ जाती हैं, इंटरमीडिएट की मार्क्स, और उसके बाद यूनिवर्सिटी की करंट CGPA है. अच्छा, दिस इज समथिंग दैट वी कैन नॉट इम्प्रूव एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन. तो एकेडमिक्स तो ज़ाहिर है जो आपके एकेडमिक्स हैं सो हैं, यू कैन नॉट इम्प्रूव इट. तो दैट्स व्हाई आई हाईली रिकमेंड कि इन फ्यूचर भी अपनी एकेडमिक्स को और CGPA को बेहतर रखें, इम्प्रूव रखें, ताकि यू कुड अवेल अपॉर्चुनिटीज़ इन फ्यूचर. लेकिन ज़ाहिर है गुड एकेडमिक्स डज प्ले अ रोल. हालांकि उसका एक माइनर रोल होता है, कोई बहुत मेजर रोल नहीं होता. आई डू नॉट डिस्करेज कि जिनकी एकेडमिक्स कमज़ोर हैं तो वो अप्लाई ना करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. लेकिन यह है कि ज़ाहिर है कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होता है, तो एक एक चीज़ पे शॉर्ट लिस्टिंग होती है. तो मुमकिन है कि एकेडमिक्स पर भी शॉर्ट लिस्टिंग हो, लेकिन एकेडमिक्स इज़ नॉट द प्राइमरी पार्ट. अगर आपकी ओवरऑल एप्लीकेशन बेहतर है, एकेडमिक्स थोड़ी बहुत कमज़ोर है, तो देयर आर चांसेस कि आप सिलेक्ट हो जाएं. ठीक है ना. तो लेकिन ये कि एकेडमिक्स डज प्ले अ माइनर रोल, लेकिन रोल बहरहाल उसका है. सेकेंडली इज द को करिकुलर एक्टिविटीज़. उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, इसके बारे में हम बात करेंगे. और क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, जो 2 सवालात दिए गए हैं पब्लिक पॉलिसी मेकिंग के रिलेटेड फॉर्म के अंदर. आई होप कि जो हमारे टाइम पे सवालात थे इस टाइम भी वही सवालात होंगे. तो वो 2 सवालात भी इंतहाई अहमियत के हामिल हैं. Alright, let's talk about co-curricular activities. The first question, whenever we appear in any exams or submit our application for any process or any shortlisting, the first question we need to ask ourselves is what is the requirement of the examiner? जो आपको शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी साइकोलॉजी को समझना इंतहाई अहम है. तो लिहाजा अगर हम थोड़ा सा इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्यों रिक्वायर की गई हैं, तो हमें समझ आता है कि बेसिकली वो आप में लीडरशिप रोल को देखना चाह रहे हैं कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी की लाइफ में, अपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में कितने लीडरशिप रोल्स प्ले किए हैं. बिकॉज आप अगर नाम देखें SUSI प्रोग्राम का, तो SUSI फॉर स्टूडेंट लीडर्स फ्रॉम पाकिस्तान. So they're basically looking for student leaders. So you have to prove them that you are a student leader at your institute, at your organizations, ताकि आप कन्वे कर सकें अपनी शख्सियत को बहैसियत एक रहनुमा, बहैसियत एक लीडर. तो add sufficient number of co-curricular activities in application. बहुत ज़्यादा कुछ स्टूडेंट्स ऐड कर लेते हैं को-करिकुलर एक्टिविटीज़.
अगर 10 रिक्वायर्ड हैं तो वो 20 ऐड कर देते हैं, ये सोचते हुए कि हमारी एप्लीकेशन बहुत अच्छी बन जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सफिशिएंट नंबर से मुराद अगर 10 रिक्वायर्ड है तो मिनिमम आप 8 एक्टिविटीज़ लिखें, और इसी तरह मेंबरशिप एंड एसोसिएशन जहाँ मांगी गई है वहाँ पर 1-2 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपकी जो एसोसिएशन है वो मेंशन करें। और उसके अलावा ये है कि कोशिश करें कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने लीडरशिप का रोल प्ले किया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेंशन करें, ताकि हाईलाइट हो सके कि आप यू आर स्टूडेंट लीडर। ट्राई टू ऐड वैरायटी इन योर एक्टिविटीज़। अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो सिर्फ डिबेट्स के और MUNs के 15-20 एक्टिविटीज़ ऐड कर लेते हैं और सारी डिबेट्स की। दिस शोज दैट यू आर अ गुड डिबेटर, लेकिन दिस डजंट शो दैट यू आर अ गुड लीडर। ठीक है ना? अच्छे लीडर के लिए ज़रूरी है कि उसने हर चीज़ को एक्सपीरियंस किया हो। तो आई वुड रिकमेंड कि आप वैरायटी ऐड करें। वैरायटी से मुराद ये कि अगर कुछ एक्टिविटीज़ आपने डिबेट्स की ऐड की हैं तो कुछ MUNs की ऐड करें, कुछ मज़ीद सिमुलेशन सेशंस की ऐड करें। अगर आप लॉ स्टूडेंट है तो मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स को ऐड करें। कुछ वर्कशॉप्स, कुछ सेमिनार्स जो आपने ऑर्गेनाइज करवाए हैं वो एक्टिविटीज़ ऐड करें। कोई वेबिनार्स आपने कंडक्ट किए हैं उन एक्टिविटीज़ को आप मेंशन करें। अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट्स के ये भी सवालात होते हैं कि जो एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं फॉर्म में, हमारे पास उनके सर्टिफिकेट्स नहीं हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक्टिविटी का पोर्शन दिया इसलिए गया है कि उसके लिए कोई, फॉर एग्जांपल अगर आज मैं ये वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या एविडेंस होगा कि मैंने कोई वेबिनार कंडक्ट किया है? देयर विल बी नो सर्टिफिकेशन फॉर दिस, राइट? लेकिन यू कैन डेफिनेटली मेंशन इट। आप ऑर्गेनाइजेशन का रेफरेंस देकर, उनका कॉन्टैक्ट देकर आप एक्टिविटी को मेंशन कर सकते हैं। और ये कि कॉन्टैक्ट देने का मकसद ये है कि अगर इफ़ यू डू नॉट ट्रस्ट अस, यू कैन कॉन्टैक्ट एंड वेरीफाई कि मैंने ये एक्टिविटी इस ऑर्गेनाइजेशन में की है। और जहाँ कॉन्टैक्ट की बात की जा सकती है, कोशिश करें कि अगर ऑफिशियल वेबसाइट है तो ऑफिशियल वेबसाइट को मेंशन करें, और अगर ऑफिशियल मेल है तो उसको मेंशन करें। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप वहाँ के जो भी लीडिंग रोल में करंटली हैं उनकी आप कॉन्टैक्ट नंबर्स ऐड कर सकते हैं। And then, of course, participation in any virtual international activity will definitely improve your application. Fortunately, I had the privilege of participating in certain international MUNs, and then I also participated in various business conferences. Though I am a law student, लेकिन I am deeply interested in economics, politics and business. तो लिहाजा उस चीज़ ने मेरी एप्लीकेशन में बहुत अच्छा रोल प्ले किया। तो अगर आपके पास कोई ऐसी एक्रेडिट सर्टिफिकेशन मौजूद है और किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने कुछ अटेंड किया है जो फॉर एग्जांपल किसी और कंट्री से थे, यूनाइटेड नेशंस के कोई कोर्स किए हैं, गूगल से कोई कोर्सेज किए हैं, कोर्स एरा से कोई कोर्सेज किए हैं, तो उन चीज़ों को भी आप लाजमी ऐड करें। And then most important thing is add co-curricular activities that align with your goal. This is a very important part. इसको समझने के लिए मेरे ख्याल से हम पहले SOP को समझेंगे, लेकिन इसको हम फ्यूचर में भी रेफरेंस देंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको बता दूं कि अपनी SOP में आप बेसिकली जहां पर अपना गोल लिखते हैं, व्हेन यू मेंशन योर गोल, फॉर एग्जांपल कंसीडरिंग दैट आई एम अ लॉ स्टूडेंट और मैं अपना गोल मेंशन करता हूं दैट आई वांट टू बी अ ह्यूमन राइट्स लॉयर। SOP में मैंने अपना गोल मेंशन किया। अब co-curricular एक्टिविटीज में फॉर एग्जांपल आई हैव एडेड सर्टेन एक्टिविटीज pertaining to human rights. For example, I attended certain conferences on the topic of human rights. I did some simulative sessions on human rights. या मैंने human rights पर कोई moot court competition में participate किया है। इस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन ये शो करती है कि बेसिकली आप अपने मकसद के साथ कितने कमिटेड हैं और कितने डेडिकेटेड हैं। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपने जो भी अपना गोल सेट किया है और जो गोल मेंशन भी किया है SOP में, उसकी अलाइनमेंट के साथ कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज जरूर मेंशन करें। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो दिस शोज कि आप अपने गोल के साथ सिंसियर हैं। सो इस चीज़ का लाजमन ख्याल रखें। फाइनली फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। बहुत सारी एक्टिविटीज़ को ऐड करने से बेहतर है कि कुछ एक्टिविटीज़ को ऐड करें, लेकिन उनकी वर्थ होनी चाहिए, उनकी सर्टिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ऑलराइट, इन दिस पार्ट विल टॉक अबाउट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को हम आगे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स के सवालात होते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है क्या, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हमने लिखनी कैसे और रिव्यू कैसे करवानी है, उसको बेहतर हम कैसे बना सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो रिक्वेस्ट मेरे पास भी आई हैं, यू ग्रेड के लिए हो या SUSI के लिए, वो SOP के रिलेवेंट ही आई हैं।
लेकिन मैं आपको इस पॉइंट पे ये ज़रूर बता दूं कि मोस्टली स्टूडेंट समझते हैं कि शायद एसओपी इज़ द ओनली थिंग जिसकी बुनियाद पर शॉर्ट लिस्टिंग होती है, और उनका 100% फोकस एप्लीकेशन का एसओपी पर होता है। दो एसओपी इज़ अ वेरी मेजर पार्ट ऑफ एप्लीकेशन, लेकिन इट इज़ नॉट द ओनली एसओपी ऑन विच यू आर शॉर्ट लिस्टेड। आपकी पूरी प्रोफाइल, पूरी एप्लीकेशन का एक रोल होता है, तो लिहाजा एसओपी को बिल्कुल आप टाइम दें और उसको बेहतर बनाएं, लेकिन पूरा टाइम सिर्फ एसओपी को देना दैट वुड बी अनफेयर। जितने भी चार हमने कंपोनेंट्स डिस्कस किए हैं, एकेडमिक्स, को करिकुलर, एसओपी एंड देन क्वेश्चंस, चारों को इक्वली टाइम दें और चारों को बेहतर बनाएं। सो जो मेजर 3 पार्ट्स हैं एसओपी के, वो मैं आपको बता देता हूँ। आई एम ट्राइंग टू मेक इट वेरी क्विक। अगर किसी को कोई चीज़ कंफ्यूजन रह जाती है तो दे मे आस्क क्वेश्चंस इन कमेंट्स एंड देन विल ट्राई टू ऐड देम by the end of the session. All right, so the 3 major parts are: firstly, tell your story, tell your struggle, tell your journey, or start with your interest. कुछ एसओपीज मुझे रिवीजन करने का मौका मिला, तो कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी एसओपीज की स्टार्ट विलियम शेक्सपियर की सेइंग से की हुई है, कुछ ने अब्राहम लिंकन को कोट किया हुआ है, कुछ ने जॉर्ज वॉशिंगटन को कोट किया हुआ है, कुछ ने किसी फिलोसोफर को, एरिस्टोटल को कोट किया हुआ है। This is not the way you start your SOP. पहले समझें कि SOP है क्या। SOP is basically an opportunity to present your personality, to tell the examiner something that you haven't told before. पूरी एप्लीकेशन में आपने अपनी एक्टिविटीज बता दी, आपने अपनी एकेडमिक्स बता दी, अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन बता दी, उसके अलावा कुछ आप अपनी शख्सियत के बारे में बताना चाहते हैं, तो उसके लिए SOP का ऑप्शन है आपके पास। तो एसओपी समथिंग है जहां पर आप कुछ डिफरेंट देंगे, और वो डिफरेंट किसी थर्ड पार्टी के बारे में नहीं, बल्कि अपने बारे में देंगे। और जाहिर है लिमिटेड वर्ड काउंट बहुत लिमिटेड होता है, इट्स 250 व्हिच इज वेरी शॉर्ट, तो यू हैव टू प्ले विथ वर्ड्स वेरी स्मार्टली एंड वाइजली। कोई भी अननेसेसरी चीज जो कि आपकी शख्सियत को एक्सप्रेस नहीं कर रही, उस चीज को आप एसओपी में मेंशन करने से अवॉइड करें। तो फर्स्टली टेल योर स्टोरी, जिसमें फॉर एग्जांपल आप अपनी बैकग्राउंड स्टोरी बता सकते हैं कि आपने कैसे एजुकेशन हासिल की। अगर आप किसी अंडर प्रिविलेज्ड एरिया से हैं तो आप अपनी स्टोरी बता सकते हैं कि इस एरिया में जहाँ पर ये चैलेंजेस के सामना था, मैंने एजुकेशन हासिल की एंड देन आई डिड दिस 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 एंड दिस। अगर आप किसी फॉर एग्जांपल एवरेज, फाइनेंशियली एवरेज बैकग्राउंड से या हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो वो आप बता सकते हैं, अपनी स्टोरी में वो बता सकते हैं। सो जो पहला पार्ट होता है वो बेसिकली दिस इज बेसिकली स्टार्टिंग ऑफ योर पर्सनालिटी। और स्टार्टिंग जब आप पर्सनालिटी की अपनी स्टोरी के साथ करते हैं तो दिस बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग, और ओवरऑल जो रीडर भी होता है उसको भी फैसिनेट करता है, उसको भी इंटरेस्टिंग लगती है। सो आई वुड रिकमेंड, लेकिन अगर फिर भी आपके पास कोई स्टोरी, कोई स्ट्रगल, कोई जर्नी नहीं है, देन यू कैन सिंपली स्टार्ट विथ योर इंटरेस्ट। आप बताएं कि आप किस चीज़ में इंटरेस्ट हैं और आपके इंटरेस्ट क्या हैं, be it reading, be it traveling, exploring something, or anything, कुछ भी हो सकता है, depending on your personality. The second part is all about your goal and objective. This is again another important part of your SOP. अच्छा, मोस्टली जो इस पार्ट में स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो ये करते हैं कि अपने गोल को और ऑब्जेक्टिव को या तो जो उनका गोल होता नहीं है उसको शो कर लेते हैं जस्ट टू मेक एप्लीकेशन मोर अट्रैक्टिव। I would highly recommend to be you all to be very honest in SOP, और आपका जो एक्चुअल गोल है उसको ही मेंशन करें, तो that would be very beneficial for you. Second most important, और इस चीज़ को मेरे ख्याल से कि तकरीबन स्टूडेंट्स ने गलतियाँ की हैं, वो ये कि अपने गोल को बहुत ज़्यादा जनरल और वेग रखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लॉ स्टूडेंट हूँ तो मैंने लिख दिया कि जी आई वॉन्ट टू बिकम अ लॉयर, दैट्स इट। ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल है, ये आपका गोल है, लेकिन दिस इज नॉट अ क्लियर गोल, दिस इज नॉट अ स्पेसिफिक गोल। यू हैव टू ऐड वेरी मच क्लियर और वेरी मच स्पेसिफिक गोल। अगर मैं इसी के बजाय ऐड करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल I want to pursue my master's in arbitration and then want to act as an arbitrator in the International Court of Arbitration. अब ये जो मेरा गोल है ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक हो गया, जनरल नहीं है, and then this shows that I am very much clear about my pathway, I am very much clear about my goal and objective. तो लिहाजा सिर्फ डॉक्टर लिखने से बेहतर है कि आप बताएं कि आप कार्डियक सर्जन बनना चाहते हैं, या इसी तरह सिर्फ टीचर लिखने से बेहतर है कि आप बताएं कि मैं इस चीज़ में रिसर्च करना चाहता हूँ और उसके बाद
इसी मौजू को आगे स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहता हूँ. So you should be very clear and very specific regarding your goal and objective. Third part is again another important part where you play very technically, जहाँ पर आपको बहुत smartly play करना होता है, जहाँ पर आप basically link करते हैं SUSI experience को अपने goal के साथ. And this is an opportunity कि जहाँ पर आप basically जो reader है उसको बता रहे हैं कि मैं SUSI के लिए क्यों apply कर रहा हूँ, या SUSI मेरे लिए क्यों ज़रूरी है, why is SUSI very important for me, why it has so much worth for me. तो इस पार्ट में बेसिकली आप बताते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने मेंशन किया है कि आई वांट टू बिकम अ ह्यूमन राइट्स लॉयर, सो व्हाट कैन आई मेंशन इन दिस पार्ट SUSI एक्सपीरियंस में. आई कैन डेफिनेटली मेंशन कि having the SUSI experience, I would be able to perfectly link the efficient public policy making with the implementation of fundamental rights across a country and across a globe. ठीक है ना. तो पब्लिक पॉलिसी मेकिंग को थोड़ा सा लिंक करें अपने गोल के साथ, और उसी के साथ यूएस कल्चर एंड सोसाइटी को थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा मेंशन करें. बी इन फेवर ऑफ यूएस कल्चर एंड सोसाइटी, बी आई वुड रिकमेंड दैट बी अ फैन ऑफ यूएस कल्चर एंड सोसाइटी इन योर रेसिपी. For example, I could write I would have a opportunity to experience a society that has high respect for human rights, that has high respect for individual dignity, that has a high respect for absolute freedom of speech, absolute freedom of expression. तो लिहाजा ऐसे मुआशरे में अगर मैं जाऊंगा और ऐसी कैंपस लाइफ में मैं कुछ हफ्ते गुजारूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि बेसिकली जो इंसानी हुकूक हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको किसी भी मुआशरे में, किसी भी कंट्री में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है. तो अब देखें, इस पार्ट में मैंने SUSI एक्सपीरियंस को अपने गोल के साथ लिंक कर दिया. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने गोल को, ऑब्जेक्टिव को SUSI एक्सपीरियंस के साथ कहीं ना कहीं लिंक करें, and tell the reader that SUSI experience is extremely important for you to achieve your goal. And finally, do mention this is important for not only achievement of my goal, but also will play a significant role in my personal and professional growth. तो इस तरह की चीज़ आप लास्ट में मेंशन कर सकते हैं. So let's do a quick recap. Usman, back to the previous slide. So a quick recap. Firstly, tell your story. अपनी स्टोरी के साथ स्टार्ट करें. अपनी स्ट्रगल आपने जो की ये स्टार्टिंग में, उसके साथ स्टार्ट करें. अगर स्ट्रगल नहीं है तो आपकी क्या जर्नी रही है उसके बारे में स्टार्ट करें. अपनी फैमिली के बारे में बताएं. जो भी इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो आपको लगता है कि आपकी शख्सियत का एक पॉजिटिव पार्ट है, या जो चीज़ आपको एज ए स्ट्रॉन्ग लीडर पोर्ट्रे कर रही है, उस चीज़ को आप ज़रूर एक्सप्लेन करें. फर्स्टली उसके साथ स्टार्ट करें, और उसके बाद अपने इंटरेस्ट को थोड़ा सा बताएं, और इंटरेस्ट के फ़ौरन बाद अपना गोल एंड ऑब्जेक्टिव बताएं कि आप क्या बनना चाहते हैं. और गोल एंड ऑब्जेक्टिव में हमने डिस्कस किया कि इट शुड बी वेरी क्लियर एंड इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक. जनरल गोल नहीं रखना, बल्कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रखना है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें आप बताएंगे कि SUSI एक्सपीरियंस आपके लिए क्यों ज़रूरी है. Why is it so important for you to achieve SUSI experience, to experience the SUSI journey in order to achieve your goal. So this was all about SUSI, statement of purpose. Moving to the next. Usman, please, next slide. All right. So we'll quickly discuss some do's and don'ts. Previous slide. All right. Yes. We'll quickly discuss some do's and don'ts जो कि आपने focus करना है जिन पे during the entire application. It's been more than 30 minutes. I'll try to make it between 40 minutes. तो first of all, be honest with your answers. अक्सर students जो fail करते हैं वो सिर्फ इसलिए कि अपनी application को बेहतर बनाने के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा जो है ना अनरियलिस्टिक चीज़ें लिखते हैं. और जाहिर है जो आपकी SOP को रिव्यू कर रहे हैं, दे नो यू वेरी वेल, और एन मुमकिन है कि वो पाकिस्तानी हो, एन मुमकिन है कि वो अमेरिकन हो, लेकिन डेफिनेटली दे नो कि कौन से गोल्स, कौन सी चीज़ें रियलिस्टिक हैं और कौन सी चीज़ें वो हैं जो आपने AI से उठाई हैं या कहीं और से कॉपी पेस्ट किए. तो कॉपी पेस्ट इज़ अ सिन इन एप्लीकेशन. बिल्कुल भी नहीं करना. आपने ऑनेस्ट रहना है, ओरिजिनल रहना है, क्रिएटिव रहना है. ब्रिंग सम यूनिकनेस टू योर एप्लीकेशन. हज़ारों एप्लीकेंट्स हैं, आपको ही क्यों शॉर्टलिस्ट किया जाए. ब्रिंग सम यूनिकनेस. टेल देम दैट यू आर अ गुड लीडर. प्रूव that you have excellent records
you have a very clear pathway for future, and you want to do something extraordinary for the society. And then definitely show your interest in policy making, leadership role, and then willingness to contribute for society, and of course exploring US culture and society. ये जितने भी चारों पॉइंट्स हैं इन सबको थोड़ा सा लाजमी एक्सप्लेन करना है अपनी एसओपी में. एंड देन फोकस ऑन एवरी पार्ट ऑफ एप्लीकेशन इक्वली. अगर आप बेसिक सवालात के जवाबात कहीं पर भी उसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं तो डेफिनेटली दैट प्लेज अ वेरी नेगेटिव रोल और उसका कोई खास अच्छा इंप्रेशन नहीं चाहता. So focus on every part of application equally. And then give very realistic and practical answers. जो दो सवालात पॉलिसी मेकिंग के हवाले से पूछे गए उनको हम थोड़ा सा आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर नाउ ये है कि you have to be very honest, you have to be very practical regarding questions, those two questions asked. And then I would highly recommend, this is what I recommend, that you should go for second eye review. Second eye review means कि अगर मैंने कोई चीज़ लिखी है, अपनी SOP लिखी है, तो पहले तो ये कि फॉर द टाइम बिंग मैं इसको बिल्कुल छोड़ दूं एसओपी को, और कुछ वक्त के बाद मैं इसको दोबारा चेक करूं. इससे ये होता है कि दिस इज कॉल्ड सेकंड आई रिव्यू. इससे ये होता है कि वो चीज़ें, वो गलतियां जो आप पहले नहीं देख पा रहे थे, अब वो चीज़ें आपके लिए हाईलाइट हो जाएंगी. तो डू गिव इट अ सेकंड आई रिव्यू एंड देन यूज योर कनेक्शंस टू गेट एसओपी एंड आंसर्स रिव्यूड. use LinkedIn to get connected to multiple SUSI and you grade alumni, जो भी एप्लीकेशन आप फिल कर रहे हैं, एंड देन डू कॉन्टेक्ट विद देम, उनके साथ एसओपी शेयर करें और उनके साथ रिव्यू करवाएं उनसे. यू विल डेफिनेटली गेट टू नो कि आप में कहाँ कमियां हैं, कहाँ थोड़ी बहुत लेकिंग्स हैं जो आप इम्प्रूव कर सकते हैं. एंड देन ऑफ कोर्स मेक योर एप्लीकेशन एरर फ्री. योर एसओपी एंड आंसर्स मस्ट बी एरर फ्री. कहीं पर कोई बेसिक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का आना, पंचुएशन मिस्टेक्स आना, दिस प्लेज अ वेरी नेगेटिव रोल. तो उससे कोई खास अच्छा इंप्रेशन नहीं चाहता. लिहाजा आई वुड रिकमेंड कि आप अगर कोई एप्लीकेशन यूज़ करना, ग्रामरली यूज़ करें, अदरवाइज आपकी ग्रामर अच्छी है तो खुद ही रिव्यू करें उन चीज़ों को और किसी और से भी लाजमी रिव्यू करवाएं. ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ऑलराइट, दीज आर सम डोंट्स. डू नॉट कॉपी योर एसओपी. डू नॉट, आई रिपीट, आई रीट्रेट, डू नॉट कॉपी योर एसओपी. आप कॉपी करेंगे यू विल डेफिनेटली बी रिजेक्टेड. So copy karna is not a solution. Creating your own content is a solution. And do not copy answers either from any source, be it AI or be it anything else. Using AI is generally good for various reasons, but not for SOP. SOP में आपने ओरिजिनल रहना है, क्रिएटिव रहना है, यूनिक रहना है. तो मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पज के लिए AI को यूज़ करें. दिस इज नॉट गुड. दिस बेसिकली किल्स योर क्रिएटिविटी और उसकी वजह से फिर आपकी जो ओरिजिनलिटी है वो कहीं ना कहीं, बिकॉज AI इज समथिंग दैट ट्राइज टू मेक इट मोर फैसिनेटिंग, ट्राइज टू मेक इट मोर पावरफुल फॉर यू. तो लिहाजा डू नॉट यूज AI फॉर योर SOP और फॉर योर आंसर्स. डू नॉट अननेसेसरली शेयर योर आंसर्स एंड SOP विद अदर एप्लीकेंट्स. जाहिर है अगर आपकी SOP के आइडियाज़ को कहीं और कॉपी कर लिया गया तो जाहिर है जो भी रीडर हैं, जो भी चेक करने वाले हैं वो एक ही हैं. So that again does not give a good impression. Do not cross word limit. Of course, you all know this 250 word limit है तो 250 के अंदर ही अंदर रहना है. लेकिन I would recommend कि अच्छा कुछ स्टूडेंट्स के सवालात होते हैं कि मिनिमम वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए. I would recommend कि अगर 250 वर्ड लिमिट है तो 240 should be the minimum. वैसे मिनिमम का सवाल होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी in case if you do have this question, it should be between 240 to 50. 240 से कम नहीं होनी चाहिए बिकॉज ये कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं देता. Do not share information in your SOP that you've already provided in your application. Another important part, do not start your SOP with my name is Shahzaib Ali, I study in this university. Do not start your SOP with this, क्योंकि ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आप ऑलरेडी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में दे चुके हैं. अपना नाम भी बता चुके हैं, अपनी यूनिवर्सिटी की बता चुके हैं, सारी चीज़ें बता चुके हैं. SOP is an opportunity के जहाँ पर आप कुछ अपने बारे में एक्स्ट्रा बताएं. So tell something extra that favors your personality overall. And finally, do not start SOP with any quotation, any saying or any poetry. बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये चीज़ required नहीं है, बल्कि इसको ऐड करना plays a negative role and then gives an impression कि आप unnecessary चीज़ों को ऐड करके word limit को पूरा करना चाह रहे हैं या impress करना चाह रहे हैं. अपनी personality के बारे में बताने के लिए आपके पास बहुत कुछ है नहीं, तो ज़ाहिर है इसका कोई अच्छा impression नहीं जाता. Usman, please, next slide.
All right. As I mentioned earlier, Acha, Osman, if we could go back to the previous slide. Thank you. Before moving forward, हम जो दो बेसिक क्वेश्चन से पब्लिक पॉलिसी मेकिंग कर लेते हैं, तो उसके हवाले से भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं. So first question is in the SUSI application is highlight an outdated policy which you think is very much outdated in Pakistan, and then how would you solve it if you were in a leadership role? Now you see this is a very basic question. इस चीज़ को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपको रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा कहीं से आंसर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. अब देखें आपके इर्द गिर्द में, सराउंडिंग्स में कितनी पॉलिसीज हैं जो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हैं इन पाकिस्तान. और नहीं तो आप अपने क्लासरूम में देख लें कि आपको क्लासरूम में बेशुमार पॉलिसीज मिल जाएंगी. फॉर एग्जांपल टीचर्स रिक्रूटमेंट पॉलिसी, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स एंट्री इनटू द यूनिवर्सिटी एमसीक्यूज की बुनियाद पर करना, फॉर एग्जांपल इट कुड बी एनीथिंग, टीचिंग मैथडोलॉजी, ठीक है ना. लेकिन पब्लिक पॉलिसी में एक बात का जरूर ख्याल रखना है कि वो पॉलिसी हो जिसका पब्लिक पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है ना. तो ऐसी कोई पॉलिसी हाईलाइट करनी है, और ज़ाहिर है हमारी सराउंडिंग्स में बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं. इसमें आई वुड रिकमेंड कि कहीं पर भी इट नो वेयर वी शुड कॉपी एनीथिंग फ्रॉम एनी सोर्स, बल्कि खुद अपनी सराउंडिंग्स में देखें. इट प्लेज अ वेरी गुड इम्प्रेशन जब फॉर एग्जांपल मैं मेंशन करता हूँ कि आई एम फ्रॉम एन अंडर प्रिविलेज्ड एरिया, और फिर मैं पॉलिसी कोई ऐसी हाईलाइट करता हूँ आउटडेटेड जो मेरी सराउंडिंग्स में एग्जिस्ट करती है, मेरे एरिया में एग्जिस्ट करती है. तो ये डेफिनेटली दिस टेल्स दैट दिस इज अ वेरी रियलिस्टिक ऑब्जर्वेशन. ये आपकी अपना मुशाहिदा है जिसकी बुनियाद पर आप इस पॉलिसी को हाईलाइट कर रहे हैं कि ये आउटडेटेड है. और फिर ज़ाहिर है उसका सोल्यूशन भी आप दें. अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि गूगल से या मल्टीपल सोर्सेज से उठा के ऐसी पॉलिसीज दे देते हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर शायद बनती हैं, और शायद हमारे अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स को भी उनकी अंडरस्टैंडिंग ना आती है. फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा वो सूजी एप्लीकेशन में फिजिकल पॉलिसी पे डिबेट करें, जो फिजिकल पॉलिसी हमारी जो है या मॉनिटरिंग पॉलिसी हमारी बहुत आउटडेटेड है, या इसके अलावा फॉर एग्जांपल हमारी फॉरेन पॉलिसी पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं. अच्छी बात है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेशक होगी इस हवाले से, वी हैव नो डाउट. लेकिन यहाँ जो सवाल पूछा गया है उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ों को फोकस करने की ज़रूरत है जो रियलिस्टिक हो, जो आपकी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन हो, कहीं से रिसर्च करके कॉपी करके नहीं करनी, ठीक है ना. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रियलिस्टिक, टू बी प्रैक्टिकल. अपनी सोसाइटी में बेशक वो एक बुनियादी, बिल्कुल बुनियादी पॉलिसी हो, लेकिन ये कि उसका अगर पब्लिक पे इम्पैक्ट पड़ता है तो उसको आप हाईलाइट करें और उसका सोल्यूशन बताएं. So this is a very simple part. So the only tip for this part is to not copy it. Do not try to add a policy के जो कि बहुत कोई बड़ी पॉलिसी है, कॉम्प्लेक्स पॉलिसी है, बल्कि कोशिश करें कि सिंपल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखें. The only thing you need to ensure is originality, reality and creativity, ठीक है ना. And the second question is asking about your one initiative that you will take when you return to Pakistan from SUSI experience. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि जहाँ पर आपको अपने गोल को माइंड में ज़रूर रखना है. ज़ाहिर है फॉर एग्जांपल आई हैव मेंशन दैट आई एम अ लॉ स्टूडेंट एंड आई वांट टू परस्यू माय करियर इन ह्यूमन राइट्स. तो ज़ाहिर है मैं जब सूजी एक्सपीरियंस करूँगा, वापस आऊँगा, तो मेरा प्राइमरी इंटरेस्ट किस चीज़ में होगा? मेरा इंटरेस्ट ज़ाहिर है ह्यूमन राइट्स लॉ में ही होगा. तो फॉर एग्जांपल आई कुड से दैट आई वुड फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स इन द एंटायर कंट्री. और यह है कि मैं जो लीगल सिस्टम में ह्यूमन राइट्स के मुताबिक जो फ्लॉज, लेकुनाज एग्जिस्ट करते हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रगल करूँगा. सो दिस शुड बी क्लियर कि आप अपने गोल के रिलेवेंट ही कोई इनिशिएटिव लेंगे, ज़ाहिर है. सो दिस शुड बी, यू शुड अंडरस्टैंड कि ये आपके गोल के साथ कहीं ना कहीं लिंक करना चाहिए. सेकेंडली इस हवाले से ये है कि do not only tell that I will take this initiative, also tell that how will you take this initiative. सिर्फ ये नहीं बताना कि आई विल प्रमोट ह्यूमन राइट्स. आप ह्यूमन राइट्स को कैसे प्रमोट करेंगे, उनकी डिटेल्स बतानी है, तफसीलात बतानी है. तो आपने एक एक चीज़ बतानी है कि मैं टीम बिल्ड कर, आई बिल्ड टीम फॉर माई सेल्फ, देन विल फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन, विल गेट इट रजिस्टर्ड, will take the key stakeholders into confidence, will identify the lacunas in the legal system, will make a report on it, will send it to lawmakers. तो ज़ाहिर ये पूरा प्रोसेस बताना शो कर रहा है कि यू आर वेरी क्लियर कि आपने वापस आकर क्या करना है. सो फर्स्ट थिंग कि आप उसको गोल के साथ लिंक करें. सेकेंडली also tell that how will you do it, how will you achieve this contribution, yeah, how will you contribute for society.
this was all about the two questions about the public policy. ऑलराइट, हम सूजी इंटरव्यू के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे. डेफिनेटली इंशाल्लाह हमारी ऑडियंस में जो भी सिलेक्ट होते हैं उनसे हम वी कैन डेफिनेटली हैव अ सेपरेट सेशन ऑन सूजी इंटरव्यू. लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ. इन शॉर्ट, आई यूजुअली रिकमेंड सेमी फॉर्मल ड्रेस फॉर सूजी इंटरव्यू. बल्कि जो भी इंटरव्यूज़ अमूमन जो फॉरेन एजेंसीज कंडक्ट करती हैं उनके लिए यू डू नॉट नीड टू वेयर कोट टाई एंड एवरीथिंग. बहुत ज़्यादा कोई फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं होती. और इसी तरह बिल्कुल टी शर्ट में आना भी बिल्कुल मुनासिब नहीं है, बल्कि सेमी फॉर्मल ड्रेस कर लें आप. ड्रेस पैंट कर लें और उसके साथ एक ब्लैक कोट ऐड कर दें और फिर एक मैचिंग में फॉर्मल शर्ट ऐड कर दें लाइट कलर में कोशिश करके. सो दिस इज द ड्रेस आई प्रेफर फॉर इंटरव्यू. एंड देन डेफिनेटली you should have a blank and clear background, क्योंकि यूजुअली सूजी के इंटरव्यूज ऑनलाइन होते हैं, वर्चुअल होते हैं. अगर तो ऑनलाइन और वर्चुअल होता है तो यू शुड फ्रंट द लाइटनिंग आगे से आ रही हो एंड देन द बैक साइड शुड बी क्लियर. और बहुत ज़्यादा कोई ऐसा ना हो कि कोशिश करें कि कोई अगर दीवार है, कोई ऐसा बैकग्राउंड के जहाँ पर कोई डिस्ट्रैक्शन ना आ रही हो. एंड देन ऑफ कोर्स बी रिलैक्स्ड, बी स्ट्रेस फ्री, ट्राई टू स्माइल व्हेन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. और अपने इंट्रोडक्शन की ज़रूर प्रैक्टिस करें कि हाउ विल यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. और अपने इंट्रोडक्शन में अपनी बेसिक एजुकेशन के बारे में बताएं, अपने सिटी के बारे में बताएं, एंड देन व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ वो बताएं. किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपका रोल है तो वो बताएं. कोशिश करके इसको शॉर्ट रखें, लेकिन अपनी जो भी नेसेसरी डिटेल्स हैं वो अपने इंट्रोडक्शन में ज़रूर ऐड करें. अपने एप्लीकेशन को अच्छे से पढ़ लें बिफोर यू गो फॉर इंटरव्यू. और उसमें जो आपने गोल्स लिखे हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, वापस आकर आपने क्या करना है, उस हवाले से थोड़ी बहुत रिसर्च भी करें, थोड़ा सा स्टडी भी करें. फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट्स लॉ के बारे में आपने मेंशन किया है तो उसको थोड़ा सा स्टडी कर लें. आपने अगर कोई गोल मेंशन किया है तो उस गोल के हवाले से आप थोड़ा सा रिसर्च कर लें. यू शुड हैव नॉलेज ऑफ इट, ठीक है ना. एंड देन डू नॉट अननेसेसरली ट्राई टू बिल्ड फ्लुएंट और नेटिव एक्सेंट. बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो सिर्फ इस वजह से फेल होते हैं कि वो फेक एक्सेंट बनाने की कोशिश करते हैं. देखें, सूजी प्रोग्राम में उनको कोई अंग्रेज़ नहीं चाहिए. उनको वो स्टूडेंट्स चाहिए जो पाकिस्तानी हैं, जो सिर्फ इंग्लिश में कम्युनिकेट करना जानते हैं. तो आप सिर्फ अगर किसी की लैंग्वेज को समझ रहे हैं और फिर कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो दिस इज़ मोर देन इनफ. कोई बहुत नेटिव एक्सेंट होना ज़रूरी नहीं है. बी नेचुरल, बी ऑनेस्ट. और अगर कहीं पर आपने सवाल सही से नहीं सुना या कोई ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब आपको नहीं आता तो आप सिंपली अपोलोजाइज़ कर लें. इसकी वजह से कोई बहुत नेगेटिव रोल नहीं होता. गलत जवाब देने से बेहतर है कि आप अपोलोजाइज़ करें और बता दें कि मैं इस हवाले से मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आई विल डेफिनेटली चेक इनटू इट. तो दिस शोज़ कि आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं. एंड देन ऑफ कोर्स बी रिलैक्स्ड, बी कॉन्फिडेंट. ऑलराइट, Osman, next slide please. Alright, so this was all about SUSI experience, and then all about the SUSI journey. I wish you all best of luck. If you have any questions, Osman, would it be possible for us to take some questions? Alright, if it is possible, we'll definitely try to address some question and answers. All right. I am a third year student, but I haven't attended any conference or emails. What should I mention there to make my application better? देखें, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में सिर्फ MUNs नहीं आते, बल्कि आपकी जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपने पार्टिसिपेशन जिसमें भी की हुई है. बी इट अ डिबेट कॉम्पिटिशन, कोई वॉलंटियर एक्टिविटी है, कहीं पर आपने सर्व किया है, किसी लीडिंग रोल में सर्व किया है, उसको आप मेंशन कर सकती हैं. एंड देन कुछ स्टूडेंट्स के फिर ये सवालात होते हैं कि मैंने किसी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन नहीं की, व्हाट शुड आई मेंशन. लेकिन इस चीज़ को समझें कि ये रिक्वायरमेंट है, ये कोई ऑप्शनल नहीं है. दिस इज समथिंग रिक्वायर्ड. तो लिहाजा this is something mandatory to mention at least something which proves that you have served in a leadership role. So you can mention anything, be it a debate, speech competition, be it any event that you organize, be it a webinar that you hosted, be it a volunteer, a coordinator, or anything in any organization. So you can mention anything. Inside an email so that we could communicate with you. Yeah, sure. There is my email in the slide.
and that is the next slide. So you'll definitely find it by the end of this session. Next. Osman, do we have any other question? If not, let's move to the slides, please. All right. Thank you so much, everyone, for attending session with such passions. It's been very long. I tried my best to make it as short as possible. लेकिन फिर भी 50 minutes तक जा पहुंचा है. So thank you so much. I wish you all best of luck. You can definitely reach out to me through my email, through my WhatsApp, or through my LinkedIn. You can definitely reach out to me, and then कोशिश करें. Again, the final tip: be honest, be real. Opportunities को ज़्यादा से ज़्यादा अवेल करने की कोशिश करें. Do apply for it. I highly encourage. अगर सिलेक्शन नहीं होता तो this process teaches you a lot. इस process में आप बहुत कुछ सीखते हैं. तो उससे ज़ाहिर है discourage नहीं होना in case you get rejected. I personally got rejected in many interviews, in many application processes. That this is something that teaches you ultimately. So once again, I thank all the team of Scholarship Insights, particularly Mr. Usman, for inviting me for this webinar. And I thank you all for attending session with such passions. And thank you so much for your keen interest in today's webinar. May Allah subhanahu wa ta'ala help us all in succeeding, in achieving our goals with passion and dedication. And thank you so much again, and wish you all best of luck for your future endeavors. Allah Hafiz.